पूरी सर का। पूरी का ठीक है। अभी एक दो स्टूडेंट ने ज्वाइन करना है एक्चुअली। ठीक है, कर लो क्लोज, कैमरा ऑफ कर लो। ओके ओके मैम, थैंक यू। आज हाफ डे क्लास है क्या? 12:30 बजे तक। मतलब लंच के बाद क्लास नहीं है? और मनीष जी क्या हाल चाल? बस बढ़िया। अभी वो टाइम टेबल देखा ना तो लगा कि आज छुट्टी है क्या, आज मतलब लंच के बाद। हाँ, लंच के पहले 3 लेक्चर है, 12:45 तक या 12:30 तक। तो फिर क्या आप बाकी क्लासेस शनिवार को तो नहीं मतलब कर देंगे पिछली बार की तरह? ये तो मैम बता सकती हैं, अभी तक तो कुछ बताया नहीं। क्या बोल रहे हो? बढ़िया। मैडम आज लंच के बाद जो क्लास नहीं है वो क्या शनिवार को लगाएंगे? नहीं, अभी तक कोई भी ज्यादा नहीं है। वही 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 मैं कह रहा था। थैंक यू मैम। लेकिन ये जो पीरियड्स है ना कहीं एडजस्ट जरूर होंगे। मैम सैटरडे मत लगाओ तो कोर्स वैसे ही मैम फास्ट चल रहा है। 360 आवर्स होते हैं ना फेज 1 में, तो वो कंप्लीट करने हैं। तो 360 आवर्स पूरे कोर्स में अगर आप देखोगे तो लास्ट तक चलते हैं। 360 आवर्स पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है ना, हाँ इंस्टीट्यूट को भी प्रॉब्लम होती है, हमें दिखाने पड़ते हैं वो। जैसे आप लोगों को अटेंडेंस दिखानी पड़ती है, वैसे हमें कोर्स प्लान में वो ये क्लासेस दिखानी पड़ती है। वो कोई सा भी लेक्चर उठा के देख लेते हैं, तभी तो रिकॉर्डिंग होती है। तो हमारे लिए भी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए है, हमारे लिए भी है। और क्लास में वो कभी भी आके रोज का लिंक जाता है डीजी को, वो कभी भी आके बैठ सकते हैं क्लास में। घबराओ मत, आप लोगों की अटेंडेंस भी अच्छी है, पूरी है, बाकी सब ठीक है, आप इस बैच का सही है। थैंक यू मैम।
Good morning. So yesterday there was a video for ice navigation. So Good morning, sir. Morning. Yesterday we seen the video of ice navigation. So in contingency we'll do ice navigation, how the contingencies are addressed to. Now when you're doing ice navigation, first thing is that polar code has to be assessed, and that master and chief officer is supposed to be doing the course of polar navigation or polar code. Then your ship's progress there will be dependent on what kind of ice is there. Is it thick ice or thin ice? Because you have various categories of ice, A, B and C. I'll not go into the polar code now. C is where you can go in all seasons. A, that is very thin ice. You can go only in the summer season, very thin ice. A is where you can go in all seasons, whether thick or thin. B is only when you're going in the summer season in medium ice. So the qualities of vessel, what kind of vessel is there, what kind of ship construction, dimensions or scantlings are there. And icebreaker bow construction is important basically for category A type of vessel. Your motive power of machinery is important, because if your machinery power is less, then you can't move around in that ice. C part is a master should be experienced in this. You should not be a fresher there, and you should have expertise there. D part is your operational qualities of navigation instruments. Now, the normal gyro and the normal compass working will be affected by the poles, because of course in the poles your compass will become almost perpendicular. So the operational conditions will be a different kind of gyroscope you will have for operating in these conditions. Then you also require a red light here in case you stop, because the vessel, when your convoy is there, the vessel behind you should know that you have stopped. Like you have in cars, कि आपने ब्रेक लगाया तो लाल बत्ती जली. So similarly, in vessels you are supposed to have that red light when you stop. Then assistance of tugs or icebreaker vessels is important. In case you have an icebreaker bow, then of course you might not require assistance of icebreakers itself. And normally you require assistance of icebreaker vessels. And then the ice convoy facilities out there. आज थोड़ा सा और दिखा दूंगा इसके बारे में वीडियो, so that you are little more knowing about it when you write your paper. Master of any vessel coming up or approaching dangerous ice, they have to report for the dangerous ice formation, and this ice report will be your type of ice which you've encountered, what is the GMT, date of sighting and position of this ice, because these icebergs keep moving, and on your EGDIS you will be having that position there. You can plot, and then the drift and speed will be noted, and of course you will know where it is, so that you know what actions to be taken there. So you have to go in a moderate speed. Your lookouts have to be maintained, and the whistle should be handy, because in case of fog, of course, your ship's whistle should sound. You should alter course to pass clear of ice dangers. Now, ice reports are dispatched by International Ice Patrol, and they send the warnings daily about what kind of ice are there around your position. So the ice season is from February to end of June. During the time, those ice bergs break from that ice shells and then start floating free. So the prime function of this ice patrol is to warn your shipping of what kind of sea ice is there and how it can affect your main shipping routes. So you have ice reports, you have weather reports to assist, and then you have facts charts
That was earlier there. Now you have your messages coming online for ice conditions there. So this is made twice daily, and additional reports will be whenever they have more icebergs coming up. Now for your frequencies and channels for radio, you have Admiralty list of radio signals volume 3 part 2, and that you can get on the channels also. So reports of actual sighting is done by your ice patrol aircraft, and then they publish these reports twice daily. Now for operating in ice, actually ice के ऊपर एक पूरा टॉपिक है फॉर ASM, नॉट फॉर फेज 2, बट ASM में आइस के ऊपर पूरा ही टॉपिक है, बिकॉज ASM में एक ही पेपर है. सो आइस इटसेल्फ इज वन फुल टॉपिक. Now mariners entering your ice region should take early action for updated ice reports, and these you've got ice limits which are marked on your navigational chart, and if you have single iceberg then it will be plotted. So accordingly your course and speed will be adjusted to come to the safest route as per your weather routing software. You have weather routing softwares, so इससे आपका प्लॉट करने से आपका सीधा ही आपको सारा पोजीशन जो वो सॉफ्टवेयर बता देगा. Now your lookouts are very essential there, with the additional lookouts on forecastle on both the winds during daylight hours. Secondly, those are the big icebergs जो आपको चलो पोजीशन मिल जाएगी. What about the small icebergs and bergy bits and growlers? उनके लिए you cannot get the growlers जो आपका रडार में भी नहीं आएंगे. They're very small, they're less than 1 meter high, and when they melt, they make a growling sound. So for that reason, you should have lookouts outside in the wings so that they can listen to the sound and report. Because once you listen to the sound, you can say the direction and you can take a aversive actions there. And you can take those only when your guys are not inside the bridge but outside the bridge. Anybody has done ice navigation? आप में से किसी ने ice navigation किया है? किसी ने नहीं किया. So if a vessel is without, किया है. अच्छा, किधर गए थे उस टाइम? सर ये ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास जो अंदर गल्फ ऑफ फिनलैंड फ्रीज हो जाता है ना. अच्छा, तो किस महीने में गए थे? नवंबर में? उस टाइम तो पूरा विंटर था, 9-10 महीने थे शिप पे, तो पूरा ही सीजन थे सर. अच्छा, तो आइस ब्रेकर और ऑल आगे थे आपके? खाली पोर्ट में आते थे सर, जो प्रेमोस्क और स्लूगा है वो पोर्ट के आसपास सब फ्रीज हो जाता था तो वहाँ आते थे. अच्छा, अदरवाइज आपका शिप अपने आप ही जाता है, मास्टर विल हैंडल हिमसेल्फ, करेक्ट? हाँ, गल्फ ऑफ फिनलैंड में तो सर उतना थिक आइस नहीं होता था, तो वहाँ तो आराम से तोड़ के चले जाते थे. हाँ, तो तुम लोग का कैटेगरी सी में आता है, आप लोगों का इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं होता, तो आप लोगों के नेविगेशन कुछ अलग से फीचर लगाए थे कि नॉर्मल थे? वो आइस क्लास शिप था सर, उसका बाव काफ़ी शार्प था और सारे जो एडिशनल आइस के फीचर्स होते हैं ना वो सारे थे उसमें. तो उसके नेविगेशनल आपके इक्विपमेंट भी अलग से होंगे? हाँ सर, वो आगे फॉक्सल में लाइट, फिर कैमरा, फिर आपका जो और वो सब इक्विपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से. तो जायरो वायरो सेम था कि नॉर्मल था कि अलग था? जायरो खाली वो बस ऑपरेटिंग टेम्परेचर उनके थोड़े अलग थे सर, क्योंकि वो वेटिंग में पूछा था उसने मुझसे, तब मैंने चेक किया था. अच्छा, कंपास? कंपास तो सेम ही था. हाँ, तो लेकिन उसका रीडिंग हमेशा गड़बड़ आता था ज़्यादा. वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिप कर जाएगा ना कंपास वहाँ. हाँ, यस. पोल पे है तो डिप कर जाएगा, रीडिंग आएगा नहीं. तो जायरो में सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट की जो जीपीएस मैसेजेस उस एरियाज में अगर पोल पे जाओ, तो आपके एरिया में तो चलो पोल नहीं था, यस सर. वो नियर द पोल आपको सैटेलाइट फिक्सेस भी नहीं मिलेंगे, जीपीएस फिक्सेस भी बहुत कम मिलती हैं. हाँ सर. होराइजन भी आपका ऐसा ब्लड होता है कि आप साइड भी नहीं ले सकते. हाँ, यहाँ तो विंटर में तो खैर 4-5 महीने सनराइज हुआ ही नहीं था. हाँ, तो साइड भी नहीं ले सकते हो. यस. पोजीशन फिर इसीलिए वो अलग टाइप की होती हैं वहाँ सारी चीज़ें. हाँ, और आप लोगों में रेड लाइट लगी थी? आइस क्लास था रेड तो लाइट
हाँ पीछे रेड लाइट थी, आगे बड़ी वाली जो ब्लूटूथ से ऑपरेट होती है, जो सर्च लाइट होती है आगे, हाँ, वो आगे लगी थी। और फॉरवर्ड मार्च पे कैमरे लगे थे जो कंट्रोल होते थे कैमरे भी लगे थे, तो उसमें आइस की सारी फोटोग्राफी होती होगी, राइट? हाँ हाँ सर, सब होता है। चलो ठीक है, दैट मीन अगर स्टॉप करते थे वो रेड लाइट जलती थी, करेक्ट? हाँ पीछे थी सर वो, वैसे तो यार अपना इंजन रूम की केसिंग होती है ना, उस पर लगी हुई थी वो। अच्छा, हाँ, नहीं बाहर पीछे वाले जहाज पे भी देख सकेंगे वो, उसके लिए। हाँ उनको दिखती थी सर वो। राइट, ठीक है, तो वही मैं बता रहा था, बिकॉज मैं गया हूँ, बट आई गॉन टू द ग्रेट लेक्स इन द ग्रैंड बैंक फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड इन नवंबर, सो वी द लास्ट वेसल टू एंटर देयर, बट आई एम टॉकिंग ऑफ 82, मेरा पहला जहाज था, उसके बाद नहीं गया। पहला जहाज था मेरा एस के रेट्स कालिदास, वो आइस क्लास वाइस क्लास तो था नहीं, नॉर्मल उस टाइम तो ऐसे ही जाते रहते थे, कैरेट शिप था। हाँ, तो हम लोग को बाहर खड़ा कर दिया था विंग्स में, कि ग्राउलर की आवाज़ सुना, तब से मुझे पता लगा ये है क्या, ये ग्राउलर। और रडार हमारे नॉर्मल थे, आप लोगों के नॉर्मल एक्स बैंड वहाँ चलेंगे, बिकॉज आपको देखना है छोटे छोटे जो आइसबर्ग्स एंड ऑल, उसको देखने के लिए। नाउ अगर ये ऑपरेशनल रडार नहीं है, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप ड्यूरिंग आवर्स ऑफ डार्कनेस, and if the concentration of dangerous ice warrants such action, and should be any time produced only at safe speed. So your speed should be at safe speed, maneuvering speed, not that full head RFA दे के चलो वहाँ। So ice reports आपको रेगुलर अपडेट करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी आइस रिपोर्ट्स कैसे आती थी वहाँ उस एरियाज में? आइस रिपोर्ट तुम्हारी कैसे आती थी? आइस रिपोर्ट तो सब उसमें आ जाती थी, एक तो अलग से जो वेदर रूटिंग सब्सक्राइब कर रखी थी तो उससे आती थी। बाकी जो सॉफ्टवेयर से आप, ना? तो कौन हाँ सा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा था? बाकी ब्रिज ब्रिज था सर, ब्रिज। अच्छा, ब्रिज था, ठीक है। यस। और बाकी वहाँ के पोर्ट से और उधर से लोकल अथॉरिटीज भेजती थी। क्या फैक्स पे भेजती थी, कैसे भेजती थी? फैक्स भी आता था और ईमेल पे भी आ जाता था सर। दोनों आ जाता था, हाँ, क्योंकि आप पहले तो फैक्स ही चलता था, अब हाँ आजकल आपको ईमेल भी आता है, उसमें रिपोर्ट्स यस। आप देख सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड आइस इज नॉट ओनली डेंजरस कॉम्बिनेशन बट अ वेरी कॉमन occurrence, क्योंकि ये नेविगेशन इन आइस कई बार आपके उसमें आ गया है कंटीजेंसी प्लानिंग। तो कंटीजेंसी प्लान में इमीडिएट एक्शन वो सारा लिखना होगा, वैसे ही ऐसा थीसिस नहीं लिखना है। You have to write about immediate action, command center, and emergency team, backup team, and the second mates का safety team जो है वो। तो all that you have to write in that format। चाहे ये लिखा हुआ ऐसे है, बट फॉर्मेट वैसे ही बनाना है, बिकॉज अगर आपने ऐसे लिखे हैं तो नंबर आपके कम मिलेंगे। अब सेफ्टी पेपर में मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर्मेट। अब आपको रिस्क असेसमेंट बाद में कराऊंगा, तो रिस्क असेसमेंट अलग फॉर्मेट है, चेकलिस्ट अलग है, रिस्क असेसमेंट अलग है, वो दोनों आपको बाद में कराऊंगा। दैट इज इन दी एंड, कोर्स के एंड में कराएंगे। सर फॉर्मेट किसका बनाने के लिए बोल रहे हो? अभी तो कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो कंटीजेंसी में आपको दिखाया तो था कि ठीक है सर। इमीडिएट वो एक्शन। अभी प्लान मैं है। आपको, हाँ, आपको मेल भेजूंगा आज सारी, ठीक है, आज आपको सारी मेल भेज दूँगा ऑफ द, अभी कराया जो है ना एंटायर कंटीजेंसीज का मेल करूँगा। तो जितनी भी कंटीजेंसीज हैं, यू हैव टू मेक दैट फॉर्मेट अंडर इमीडिएट एक्शन, कमांड सेंटर, इमरजेंसी टीम, बैकअप टीम एंड सेफ्टी टीम। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो आपको बना के फॉर्मेट दिए हुए थे वैसे ही करना। ना ये तो थीसिस में लिखा हुआ है, बट आपको अकॉर्डिंगली लिखना। अगर वो चेकलिस्ट आता है तब पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ कंटीजेंसी प्लान है तो कंटीजेंसी प्लान विल बी मेड इन दैट फॉर्मेट। नाउ वेसल मस्ट एंडेवर टू कीप मूविंग इन आइस मेकिंग हेडवे, क्योंकि अगर आपने हेडवे नहीं मेंटेन किया तो आइस फ्रीज कर जाएगी, लॉट ऑफ प्रेशर विल बी ऑन द हाई। सो इट इज बेस्ट टू मूव विद द आइस, नॉट अगेंस्ट इट। Maintain freedom to move, bearing in mind that excessive speed can lend itself ice damage, and mariners should have lot of patience here। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो आपको अबंडन करना पड़ेगा। Should the vessel be trapped in ice and held, bear in mind that the freedom is lost, the ship will only move the ice
wherever the ice is going. So should the forward motion of the vessel be impeded, try doing an astern movement, but don't try it too much because it can damage your propeller and rudder. So you search for a lead throwing pack ice. Continuous movement astern should be avoided because of danger to the rudder and propeller. Continuous plotting the ship's position in confined waters is essential at this stage to keep clear of shoals and to prevent disorientation. Plus, you have to check on your compasses and prominent landmarks, and then you have supposed to have alternatives in case you are icebound. And owners can reroute your vessel to another port, and if you can't get rerouted, then you assemble with other ships for movement in ice convoys along with your icebreakers. Follow the track of icebreaker vessel or ice strengthened vessels towards destination. उनकी वेग को फॉलो करोगे. If equipped with icebreaker bow and ice strengthened, then you can attempt the passage independently जैसे तुमने किया था because you were ice class. Before leaving port, consider adding ice strengthening in the forepart. बट इसका मेथड नहीं डालो क्योंकि इसने बोल दिया कि सीमेंट भर दो. वो नहीं कर सकते बिकॉज बाद में तो ड्राई डॉक में पूरा फोरपीक को काटना पड़ेगा. सो आइस स्ट्रेंथनिंग करा सकते हो बट नॉट विद दिस मेथड ऑफ फिलिंग अप योर टैंक विद कंक्रीट. तो इसको आप ज़रा अवॉइड कर दो. यू कैन पुट पिट पॉट बीम्स देयर बट डोंट ट्राई फिलिंग अप योर टैंक विद कंक्रीट. Ice damage will depend on the condition of ice and passing through. The mariner should be prepared to accept some damage to vessel, but try to limit it. Severe wear of the outer shell plating will be experienced in the waterline level at certain height and depth above this level according to the thickness of ice. Your paintwork on superstructure can be expected to flake and wear steel work, and if your temperatures are below freezing at any period. So denting of shell plates in the bow area must be anticipated. The stem shell will be stripped clean of paint and protective covering. Rudder and propeller area is extremely susceptible to ice damage, like large flows passing there and colliding in the upper area of rudder and rudder securing to the stock. So lifeboat tanks to be emptied, steam lines to be drained, lighting of pipes to be checked, ballast water tanks and fresh water tanks to be inspected daily to prevent freezing over. So these are the actions which you have to do for ice navigation. So ground tackle basically is when you are carrying your anchors in tug and attaching a buoy there, and then you are attaching wires there to the anchor so that you can pull your vessel out. So that is if you are stranded in some area, you want to pull yourself out when the tide is assisting you, then you will rig your ground tackle. So you have a dredging craft, lighters, hauling power of large vessel. So if your vessel is not in tidal water, secure a vessel with ground tackle. So that is what the use of anchors carefully at considerable distance, because आप किस तरह से अपने आप को पुल आउट करोगे. जैसे कोई कुएं में गिर जाता है तो उसको रस्सी से बांध के, जैसे कोई जानवर उसको बाहर निकालते हैं, तो उसी तरह आप जहाज को एंकर को से पुल करके बाहर निकालोगे. सर इसकी कोई वीडियो है ग्राउंड टाइटल की? वो भी दिखाते हैं. पहले इसको पढ़ा के फिर आपको वीडियो सारे दिखाएंगे. तो पहला टाइम पहले आपको सब कुछ पढ़ा दें, फिर आपको सारी वीडियो दिखाएंगे. अभी तो YouTube में रोज कोई ना कोई अपना वीडियो डाल देता है, तो उसमें काफ़ी मटेरियल है. अब तो स्पेशली जब ऑनलाइन शुरू हुआ है तो बहुत कुछ आ गया है. अब यू रिग अप हेवी परचेजेस सो दैट आपको लिफ्टिंग पावर ज़्यादा मिल जाए.
to get greater mechanical advantages and lower stresses. So ये स्ट्रेस झटके से नहीं देना, कंटिन्यूसली पुल करना है सो दैट यू कैन रीफ्लोट योर वेसल. तो रीफ्लोट जब करना है राइजिंग टाइड में करेंगे. अगर टाइडल रेंज ज़्यादा नहीं है तो फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते. सो check the draft of the vessel and compare it with estimated draft prior to impact. The difference in centimeter multiplied by TPC indicates amount of loss buoyancy. So tidal range must be provided, may provide this required buoyancy in high waters or even more. But अगर tidal range कम है तो फिर वो आपको benefit नहीं मिलेगा. Then you try to discharge your ballast to provide your required buoyancy. अगर आपने बैलेंस पहले ले लिया तो यू हैव टू, पहले लिया हुआ है तो उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो. नेचर ऑफ बॉटम सर्वे हैज़ टू बी डन इन द सराउंडिंग सी बेड, नोटिंग योर डेप्थ्स एंड मटीरियल. सी बेड फॉर्मेशन इन सम लोकेलिटीज चेंजेस विद टाइड, मेकिंग इनिशियल सर्वे अनरिलायबल. सो सम बीचेस विल हैव क्रॉस करेंट्स एंड स्कोरिंग बाय सर्व. तो उस एरियाज में आप बीचिंग नहीं कर सकते. So survey will indicate the best direction for refloating. Now when you are involving tugs, then the owners and Lloyd's agent should be informed and underwriters should be notified, and the next port of sea protest should be noted. तो नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल में नोट ऑफ सी प्रोटेस्ट भी आपको डालना है ऑफिशियल लॉग बुक में. यह आपका लॉ में पढ़ाया जाएगा व्हाट इज नोट ऑफ सी प्रोटेस्ट. सर्वे ऑफ द हल एंड मशीनरी शुड बी कैरिड आउट and a certificate of seaworthiness should be obtained before proceeding, because if you are not seaworthy then you will not be allowed to sail. तो वो आपको obtain करना है after you have grounding done. अब ETA देखते हैं किधर है. इमरजेंसी टोइंग apparatus, फिर सारी चीज़ें कराते हैं. और टैंकर्स में आपका ETA इम्पॉर्टेंट है, और टैंकर्स में ही ज़्यादा होता है इमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट्स. सो इट इज मोर देन 20,000 टन तो फिर एक आगे और एक पीछे आपका ETA होगा. बाकी वेसल्स में ETA इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू कैन हैव. सो ETA बेसिकली is to facilitate salvage and emergency towing operations. क्योंकि टैंकर्स में the problem is spill and explosion, इसलिए ETA is very important. So an emergency towing arrangement should be fitted at both ends for all tankers of not less than 20,000 deadweight, constructed on or after 1st January 96. For vessels constructed before 1st January 96, you should have arrangement fitted at the first schedule and the dry docking after 96, but not later than 3 years after that. So design of the towing arrangement shall be approved by your flag state. अब इसमें जो requirements है सोलर्स की वो बता रहे हैं. So aft ETA should be pre-rigged, मतलब उसको रिगिंग करने की जरूरत नहीं है. एक बंदा 15 मिनट में उसको रिग कर सकता है. इट इज ऑलरेडी रिग, आपको बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है. So pickup gear or aft towing pennant shall be designed for manual operation by one person, taking account the absence of power and potential for environmental condition. And this pickup gear should be protected against weather. Forward ETA जो है आप 1 घंटे में डिप्लॉय कर सकते हैं, बट aft को 15 मिनट में डिप्लॉय करें. तो forward is not pre-rigged, aft is pre-rigged, and it should be clearly marked to facilitate safe and effective use even in darkness. So इसकी inspection should be regularly done at regular intervals. Maintenance इसकी proper होनी चाहिए because this is one of the critical equipment for you. Now the requirements are, 2 sizes are there. जो आपका ETA का जो SWL है, it should be 1000 kilonewtons for tankers between 20,000 over 20,000 to less than 50,000, and for tankers equal to or more than 50,000 deadweight
it should be 2000 kilonewtons SWL. So the minimum breaking load of all components is double of SWL. So breaking load is double, SWL will be 1000 and 2000 kilonewtons. Now the main components here will be the tug, tow line, pennant, chafing chain, fair lead, and the connection, the strong points जहाँ आपका पनामा लीड है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पनामा लीड से जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका बिट हो जाएगा. So system should facilitate ease of connection and it should be released on board in absence of main power. So for forward you have optional pickup gear but aft yes, towing pennant optional forward, aft yes, and then chafing gear, fair lead, strong point will be, and the roller pedestal of the old man. These are important for forward and aft. नॉर्मली आपको ETA के बारे में टैंकर सेफ्टी कोर्स में भी कराया जाता है क्योंकि टैंकर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है. So bow and stern, strong point and fair lead should be located so as to facilitate towing from either bow, either side of bow or stern and minimize stress on the towing system. Axis of the towing gear should, as far as practical, be parallel to and not more than 1.5 meters on either side of the center line. Actually, I have to get out wrong. The distance between strong point and the fair lead should be not less than 2.7 meters and not more than 5 meters. Should be close to the center line and facilitate towing from either side of the bow or stern. Plus, it should minimize your stress on your towing system. The length of your towing pennant should be twice the lightest seagoing ballast-free board at the fair lead plus 50 meters. So basically आपका cushioning effect ये length देता है. अगर एकदम tight होगा तो cushioning effect नहीं मिलेगा और part कर जाएगी line. Now the strong point should be designed as an integral part of fitting of the fair lead, and you should have a stopper. Fair lead की जो होगी have an opening large enough to pass a larger portion of the chafing gear. So fair lead आपकी Panama fair lead होगी, which will be oval shaped. Minimum opening should be horizontal axis 600 mm, vertical axis 450 mm. It should give adequate support to the towing pennant during operations, that is bending of 90 degrees to port or stop, 30 degrees downward bending, and the bending ratio should be not less than 7:1. So vertical location, it should be located as close as possible to the deck. Position should be the chafing chain is approximately parallel to the deck when it is under stress between strong point and fair lead. Then your type should be stud link chain, grade U3, a very high tough steel chain, 76 mm in diameter. Length should be enough to ensure the towing pennant remains outside the fair lead. Chain should extend from strong point to a point at least 3 meters beyond the fair lead for meeting this criteria. Now this is your pear-shaped link. One end should be suitable for connection, other end should be fitted with the pre-shaped open link allowing connection to the standard bow shaft. So this is the operational part of the ETA. So storage, it should be stored to have a rapid connected strong point. Towing connection should be such that high height from termination allowing for standard bow connection. Now here the towing gear is there in this the box here. After ETA is in this box, and this will be passed through this Panama lead. अब इसमें 2 Panama lead दिए हैं, कईयों में सेंटर में एक ही रहता है.
सो आपका दिखाया हुआ है कि मैसेंजर बॉक्स यहाँ है, यहाँ से आप इसको पास कर सकते हो एंड यू कैन टेक द लाइन एंड कनेक्ट। एंड ये बॉय पानी में गिरेगा, टग उसको खींचेगा, फिर टग की लाइन यहाँ आएगी, आप उसको सिक्योर कर लोगे इसके साथ एंड देन यू गेट पुल्ड फ्रॉम आफ्ट। उसका वीडियो भी दिखाएंगे बाद। सो आफ्ट के लिए बेसिकली पिकअप फ्लैशिंग गियर बॉय होगा, जो करंट केबल कनेक्ट होगा, और मेंबर ऑफ क्रू विल अपॉइंट दैट। तो मैं इसको ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आता हूँ, आई नॉट कम मोर इन दिस पॉइंट। ये तो ऑपरेशनल पार्ट है, कैसे होता है, टग कैसे खींचेगा। फॉरवर्ड ईटीए का ये पॉइंट है, इसको तो टर्न नहीं कर सकते। तो ये टोइंग वायर है, यहाँ आपका इसका पेनेंट वेनेंट लगा हुआ है, और ये बेसिकली टोइंग पेनेंट है, और यहाँ से आपकी चेन जाती है जो इससे कनेक्टेड है, और यहाँ आप इसको कनेक्ट कर दोगे बाउ स्टॉपर से। अपने बाउ स्टॉपर से आपका बाउ स्टॉपर बढ़िया होना चाहिए फॉर कनेक्शन, इसलिए व्हेन यू गो इनटू यूएस वाटर्स आपका बाउ स्टॉपर इज सपोज्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। अब इसी में आप टग बोट से इसको अटैच कर सकते हो, वो पूरी वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे होता है। तो एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, टग बोट क्या करेगा, उसमें कैसे कनेक्ट करेगा, सो दैट वीडियो से समझा देंगे। इसका तो आप जस्ट थीसिस पढ़ लेंगे। मेंटेनेंस करते हैं बिकॉज पीएमएस में आता है, तो पीएमएस के लिए कर देते हैं। सो आफ्ट ईटीए शुड बी इंस्पेक्टेड वीकली टू चेक ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ components. If the bow shackle connection has been disconnected, then the crew must check the connection has been carried out before tanker's departure. Battery of flashing buoy should be replaced every 6 months. Drum brake should be regularly checked at regular intervals. Now, if the case content has been removed, follow the instructions to pick up gear correctly. Keep the special pennant shackle about 5-meter cable outside the case. Pass the cable through the notch. Jack the cable in 8-shaped coils. Fitted in pickup buoy topside down between 8-shaped coils. Connect the cable. ये तो इसके connections बताए हुए हैं। Now every 2 years a drum brake to be released and the brake band removed to clean the drum brake roof surface. Pennant wire to be checked and greased with standard wire cable products and wound again. Brake band to be refitted and brake regulated as above. So these are the PMS requirements for ETA. Then your air motor reduction binding device to be provided, and that should be checked as per maker's recommendation. Forward ETA to be inspected weekly to check your shaft chain and pin securing devices. Now for ETA for other vessels, so there is no requirement for tankers below your 20,000 tons dead weight, and vessels will be fitted with ETA. The owners, operators, managers such ships and masters need to be having contingency plan. So even if you don't have ETA, you're supposed to have contingency plan for ETA. So that should cover the connection for emergency towage and should identify your strong points and failures for towing and measures to prevent chafing of tow line. So your special equipment should be needed there, whatever identified that should be in the plan. So along with the ETA you're supposed to have emergency towing booklet, जिसमें आपका limitation of towing apparatus, master response, safety, towing preparation. ETA नहीं है, कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए ETA का सर। हाँ वो तो होना चाहिए, वेदर यू हैव ETA और नॉट, सबके पास होना चाहिए। उसकी कंटीजेंसी प्लान तो होना चाहिए, वेदर यू हैव ETA और नॉट यू आर सपोज्ड टू हैव। क्योंकि अगर आप स्ट्रैंड हो जाओ तो क्या करो, सपोज यू आर स्ट्रैंडेड एट मिड ओशन, तो फिर आप क्या करो,
So that plan should be there. तो फिर वो हेलीकॉप्टर लेके आएगा. You can take ETA on hire. So हेलीकॉप्टर लेके आएगा वो ETA. So but plan should be there. ये कहाँ कनेक्ट करोगे वो सब होना चाहिए. कौन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का होगा, that should be there. So ship specific data should be there in the booklet. Our anchor chain, mooring lines, radio equipment, power system, lifting devices, all should be there. Plus your deck tools, mooring and towing fittings forward and aft. Then your organization of task, who will be organizing what kind of communications you have, task equipment, then your towing patterns, towing from bow or towing from stern, then your decision matrix, if you have towage fitted or you don't have towage fitted, and then procedures for connecting towing lines forward, bow से stern से, ये सारा आपकी emergency towing booklet में होगा. Then your damage and seaworthiness, steering, propulsion, power system, all should be there in this towing booklet. So this is very important for you when you have ETA. तो जरा ETA पहले दिखा देते हैं. Guys, this is a short video I have made on the topic of emergency towing arrangement that are found on tankers. Now this short video will have some text for you to answer questions in the exam, especially if you are a mariner intending to appear for an examination, and it also contains a picture or a drawing of the emergency towing arrangement that I've picked up from the internet and credited the original person who has taken the photograph, but you can use it to make some notes and add to these notes and add to the text of the notes to answer questions in the exam. All right, so let's start with the emergency arrangement. So emergency towing arrangement, also known as ETA, is required to be fitted on both ends on board for every tanker not less than 200,000 deadweight. For tankers constructed on or after 1st of July 2002, the arrangement shall at all times be capable of rapid deployment in the absence of main power on the ship to be towed and easy connection to the towing ship. At least one emergency towing arrangement shall be pre-rigged and ready for rapid deployment. The emergency towing arrangement at both ends should have adequate strength for the size and deadweight of the ship, including the expected forces during bad weather conditions. The design and construction and testing shall be approved by the administration, that is the flag state. Based on guidelines developed by the IMO or International Maritime Organization for tankers constructed before 1st July 2002, the design and construction shall be approved by the administration based on the guidelines developed by the IMO. All right, so the International Maritime Organization. So for those of you who didn't understand what an emergency towing arrangement is, so for tankers which are not less than 200,000 deadweight, if they break down and for any reason they need to be towed, then a towing arrangement is provided on the ship itself. Sometimes they are provided on both, they are supposed to be provided on both the ends, so forward part as well as aft part. But one of these should be pre-rigged and ready to be used irrespective of whether the ship is in emergency or not. So it should be readily be able to be deployed. So if any other ship comes and they provide an interest in towing your tanker, then you can use this emergency towing arrangement to connect to the other vessel or connect to a tow for our own vessel to be towed if there is a breakdown. For example, if your rudder has broken or if there is a propeller damage or the main engine is not working or there is due to a heavy fire or due to any other emergency your vessel is incapable of being maneuvered, then you use this towing arrangement. In the next slide, of course, I have used a picture that I have taken from the internet, referred below, and you can use this drawing to explain to your examiner or to your assessor on how an emergency towing arrangement works. So you can see the emergency towing arrangement
is firstly connect. This is the forward part of the vessel we are showing. So forward part of the tanker, arrangement at the forward part. Similar arrangement is also located at the aft part of the vessel. So the emergency towing arrangement from the forward part of the vessel is connected to a tug. In this case, it could also be connected to another vessel, but in this case, it's connected to a tug. The tug is also used. The tug towing wire is available. Part of the towing arrangement is tug towing wire. And you can see on the vessel, the towing arrangement is connected to a very strong point that can take the stress or the load of the vessel. The load passes, or the chain passes, through a fair lead to prevent chafing from occur. Then there is a chafing chain available. Then we have the towing pennant, which attaches or connects the chain to the tug towing wire through a tug double polyamide spring to take the tension, if any, between the tug and the vessel. So I just made this short video for those of you who asked me on making a video on emergency towing arrangement. And of course, if you want more details, then please study other notes, but this is good enough for you to be able to answer the questions in the exam if asked to. All right, I'll see you soon with my next video, guys. Bye. Okay, then we'll have a break now.
The following video is a training aid to be used together with the Right, so we'll have a tea break now. सर Next, नॉर्मल रस्सी सर हाँ बोलो। नॉर्मल रस्सियों वाली टोइंग क्यों नहीं यूज करते, टूट सकती हैं इसलिए? रस्सियों वाली टोइंग बेटा होगी नहीं, क्योंकि ये पूरा वेसल को टो कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल इतना नहीं टो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वेदर कंडीशन खराब है, ये है, तो टूट जाएगा तो आपका तो वैसे ही इंजन नहीं चल रहा। वही तो सर, वो मतलब टूट सकती हैं, यही रस्सियों कारण है। हाँ ये रीज़न है। और चेन इसलिए लगाते हैं कि चेन काफ़ी स्ट्रेंथेंड होती है एंड उसके वो इट कैन टेक द कुशनिंग ऑफ दैट, राइट। बट सर ये हर वेसल का टोइंग अरेंजमेंट सेम तो होगा नहीं ना सर? नहीं देखो ऐसा है, आपके टैंकर्स का मेन है। अब टैंकर का सपोज स्ट्रैंडेड हो गया है, सो इमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट इसलिए है कि वो कहीं जाके कहीं पोल्यूशन कर देगा, इसीलिए उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट, नॉट फॉर द अदर वेसल। ओके सर, ओके सर। इसीलिए मैंडेटरी है टैंकर्स के, राइट। तो उस कार्गो ही कैरी कर रहा है ऑयल का ना, सो मेजर पोल्यूशन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो वील हैव अ ब्रेक।